Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our new topic बच्चे, वो है models. Then let's begin बच्चे. Types of models. Models are two types, primary models and model auxiliaries. So हम start करने वाले हैं. We are going to start with primary models. They are three in numbers. Be, have, do. ओके बी हैव डू है. बी के अंदर इंक्लूड होता है बच्चे इज आर एम वॉज वर, हैव हैज हैव हैड एंड डू के अंदर डू डज डिड. प्राइमरी मॉडल्स असिस्ट मीन वर्ब्स इन एक्सप्रेसिंग देयर प्रॉपर मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, शी डिड नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर, यू हैव नॉट आंसर टू माई लेटर, दे आर प्लेइंग विद अ रेड बॉल, ही वॉज सोइंग सीड्स इन द फील्ड. एंड मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं बच्चे? Like primary models, model auxiliaries to assist main verbs in expressing their proper meaning. At the same time, they have a meaning of their own. Some of the important model auxiliaries are can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to, used to, dare, etc. Use of some model auxiliaries को हम कैसे यूज करते हैं? तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे will, would and shall के साथ. Will, shall are used in the future tense. ये तो सबको पता है, future tense में इनका यूज होता है. We can use shall for the subject in the first person. I और we के साथ हम shall का यूज करेंगे and use will for the all other subjects के साथ हम will का यूज करने वाले हैं. Like this, I shall write you a letter. We shall not go to movie tonight. He will treat you badly. They will not mend the shoes today. You will not speak to him anymore. Then second हमारा है we use will you and would you when making a polite request. When you are in a position of authority, remember would you is more polite than will you. Will you see me today? Would you keep quiet for some time? Will you mind speaking softly? Would you open the door for me? And third one is we can use would you like to. हम कैसे यूज करेंगे? टू मेक एन ऑफर टू समवन. वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी? वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक विद मी? तो हम क्या कर रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं यहाँ पर. नेक्स्ट है बच्चे कैन एंड कुड. वी कैन यूज कैन. कैन किस चीज के लिए यूज किया जाता है बच्चे? नेगेटिव में इसको कांट बोलते हैं और पॉजिटिव में कैन. ओके, देन कैन नॉट और कांट एक ही है बच्चे. टू से दैट समथिंग इज पॉसिबल, पॉसिबिलिटी के लिए. प्लेइंग ऑन द रोड कैन गेट यू पनिशमेंट, है ना? अगर रोड पे खेलेंगे तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है. टेलिंग अ लाई कैन गेट यू इन ट्रबल. स्टडिंग लिटिल कैन नॉट हेल्प यू. टू मच ईटिंग कांट बी गुड फॉर यू. ठीक है, ज्यादा खाना आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता. देन सेकंड इज कैन कैसे यूज करेंगे बच्चे? We can use can to express that someone knows how to do something or has ability to do something. He can speak English frequently. You can run faster than anybody else. You can lift the box. They can win today. Next है बच्चे इसका use. We can use can I, could I when politely offering to do something for someone. Can I help you sir? Can I give you a cup or hot tea? तो इस तरह से हम बोल सकते हैं offering के लिए. Next है we can use can you, could you when making a request politely. Can you get me a cup of hot milk? Could you allow me to see your boss? Next बच्चे may and might का use. We can use may to give and take permission. जब आपको permission लेनी होती है या permission देनी होती है then हम use करते हैं may का. May I come in sir? May you come in? May I speak to you now? No, you may not. Next है हमारा may का use. We can use may express possibility and use might to express remote possibility के लिए. The wind is blowing, it may be cool today. It is possible क्योंकि ठंडी हवा चल रही होगी तो हमें पता है कि ठंड होने वाली है. The sun is shining brightly, it might be cold today. There are hardly any chances. जिसका कम chances होता है then might का यूज करेंगे. ज़्यादा chances के लिए may का यूज किएंगे. We can use may to express wish. May you live long, may God bless you, may God help you. So हम wish के लिए, wish को express करने के लिए may का use करते हैं. Next is should and ought to. We can use should or ought to tell what the right thing is in a particular situation. You should return an application to the principals. You should take admission in the schools. It is very good. You ought to keep vigil at night. You ought to respect your elders and teachers. Then we use
should not and ought not. When it is not the right thing to do in a particular situation, you should not behave like this. You should not trust a liar like him. You ought not to avail to somebody who has done you a favor. If you don't like this, you ought not to do this. Okay. Then है next बच्चे, we use should or ought to. किससे use किया जाता है? When giving an advice on what to do. क्या करना चाहिए आपको? You should go for a walk daily. You should get up early in the morning. You ought to finish your work on time. You ought to repair your house. It's dangerous. We use, अब यहाँ पर should not or ought not when giving an advice on what to do. You should not trouble anybody like that. You should not teach bad things to a little child. You ought not use foul words. You ought not waste your time. तो उनके लिए भी आप ought not का use करेंगे. We use I think should, I think ought to while giving opinion. Its negative is I don't think, should, I don't think, ought to के लिए use करेंगे like this बच्चे. I think this candidate should win. I think you should go right now. I don't think and ought to happen this fortnight. I don't think you ought to behave like this. Must and have to. मस्ट एंड हैव टू का यूज कहां पर करना चाहिए बच्चे? वी यूज मस्ट और हैव टू व्हेन इट इज नेसेसरी फॉर समवन टू डू समथिंग. इट्स नेगेटिव इज मस्टंट. दे मस्ट come on time for examination. He must study hard. He has to study hard. He must not get late. Next है बच्चे must when giving opinion on an important matter पर अगर ओपिनियन देना है, when giving a strong suggestion और when living या इनवाइटिंग करना है किसी को, तब आप यूज करेंगे मस्ट का. ओके. देन यू मस्ट टेक अ लॉट ऑफ वाटर. यू मस्ट वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू स्टे हेल्दी. दिस इज अ फिल्म दैट यू मस्ट सी. यू मस्ट कम ऑन डिनर टुनाइट. तो इसी बेस पर बच्चे प्रैक्टिस ड्रिल दी गई है. जो हमने पढ़े हैं इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरीज वर्ब पढ़े हैं, हमने मॉडल्स पढ़े हैं, तो उनको अच्छे से करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल एक्सरसाइज. पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, समझेंगे, देन यू हैव टू कंप्लीट द by making own sentences.